This is also very star topic, trade and development report. Here you should just know that who releases this report. So this report is released by United Nations Conference on Trade and Development. Okay, so please write a line about this. What is the meaning of this UNCTAD? UNCTAD is a permanent intergovernmental body. Please write, UNCTAD is a permanent intergovernmental body of the United Nations. Permanent intergovernmental body of the United Nations, having 195 members including India. Having 195 members including India. So India is also a member of this, and this is the body of the United Nations. The name itself indicate, नाम से हमें पता चल जाता है कि ये किसकी बॉडी है, यूनाइटेड नेशंस की है. ठीक है. We should also know what are the other reports. Please write other reports of this body. Okay, which other reports are given by this body? So World Investment Report, Digital Economy Report, World Investment Report, Digital Economy Report, Technology and Innovation Report, Technology and Innovation Report, and Review of Maritime Report. Review of Maritime Report. Okay, these are the reports you should remember. Okay, so only prelims question can be there, mains questions no chance from this area, and this data no need to remember, just have an idea कि आपको एक आइडिया होना चाहिए. लाइक हम इंडिया में बोलते हैं ना कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, तो कैसे हम कह पाते हैं, हाउ डू वी से? बिकॉज वी से इंडियाज ग्रोथ रेट इज 6.6% एंड वर्ल्ड एवरेज इज हाउ मच, 2.4%. यानी कि एज कंपेयर टू द वर्ल्ड वी आर ऑलमोस्ट हैविंग 3 times, almost 3 times growth rate. So we should just have an idea that world average is somewhere around 2.4 and India is more than 6. So we just have this idea, but how exactly, you know, ये डेटा वगैरह वो सब याद एग्जैक्टली लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आपको एक आइडिया होना चाहिए ब्रॉडली, राइट? So in India, external sector alongside private and government sector has contributed to the domestic growth. ठीक है, तो देखिए जो जीडीपी होता है, GDP contribution happens from 3 things. In the GDP calculation method, there is a method, that is the expenditure method. Do you remember expenditure method formula? जिन लोगों ने इकोनॉमी किया है सिर्फ वो लोग, I can expect from them, E plus G plus I plus X minus M. ठीक है, तो C represents consumption expenditure of the private. C means not central government, consumption of private. G means consumption of government. I means investment, and then X, so that is external sector. ठीक है, so if you see private represents C, ठीक है, government represents G, okay, and private and government combinedly I, okay, and external sector that is X minus M, और X minus M से आपका investment भी आ रहा है. ठीक है, so this is happening from all the sides. Okay, now some recommendations they have given, just read it once. ठीक है, but not important. इंडिया को क्या करना चाहिए या बाकी ओवरऑल वर्ल्ड को क्या करना चाहिए, they have given कि financial sustainability होनी चाहिए. We should have the long term financial sustainability for the public and private sector. Social protection होने चाहिए. There should be increase in real wages. What is the meaning of real word here? Word real and nominal. Real means after adjusting the inflation. Inflation के impact को adjust करने के बाद, after eliminating the impact of inflation, that is the real wage. Okay,
तो देखिए वेज बढ़ सकती है आपकी, बट सपोज वेज इज ऑल्सो इंक्रीजिंग एंड साइमल्टेनियसली इन्फ्लेशन इज ऑल्सो देयर, तो अल्टीमेटली द परचेजिंग पावर ऑफ द वर्कर इज नॉट इंक्रीजिंग. सपोज अभी 1000 रुपीज हमारी इनकम है डेली का, और हमने उसको इंक्रीज करके 1100 रुपीज कर दिया, बट कोरोस्पॉन्डिंगली जो प्राइसेस है मार्केट में वो भी बढ़ गए, प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज. So now the same product which we are able to buy in 1000 rupees earlier, we are have to spend maybe 1200 rupees. So actually the purchasing power is not increasing. So there should be increase in the real wage. Means मतलब कि उनका inflation adjusted wage जो है वो ही increase होने चाहिए उसका, okay? And strengthen the comprehensive social protection. Social protection like provident fund. यहाँ पे लिख लीजिए, for example, provident fund. Provident fund. Insurance, देखिए this economy is very unstable. Sometimes COVID happens, sometimes some crisis happens suddenly, कोई वार हो जाता है suddenly, right? So all these unpredictable things keep coming on. So suddenly people become unemployed. So at that time they should have something as a backup. Okay. Plus, when they retire at the age of 60, then they should have some regular income so that they are not dependent on the children or they are not become burden on the family, right? That is why we need the social protection. Okay. तो बेसिकली देखिए इस तरह की चीज आप पढ़ेंगे, और ये कॉमन सेंसिकल चीजें हैं, इसमें कुछ भी नया उन्होंने ऐसा कुछ स्पेशल नहीं बोला है. और इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं? सपोज देयर इज ए क्वेश्चन इन द एग्जाम ऑन द इंक्लूसिव ग्रोथ. GS3 में क्वेश्चन आता है कि व्हाट सजेशंस आर देयर रिगार्डिंग द इंक्लूसिव ग्रोथ. तो अदरवाइज ऑल्सो यू विल राइट दिस पॉइंट. वैसे भी कॉमन सेंसिकल पॉइंट आप लिखोगे, बट व्हेन यू राइट द पॉइंट यू गिव द रेफरेंस दैट इन द report of UNCTAD, in the Trade and Development Report 2023, they suggested that there should be increase in real wage and comprehensive social protection. ये पॉइंट अदरवाइज भी आप लिख ही रहे थे, कॉमन सेंसिकल पॉइंट है, राइट? बट व्हेन यू गिव द रेफरेंस ऑफ द रिपोर्ट योर आंसर बिकम मोर वैल्यू एडिड. तो जो हम कहते हैं ना कि मेंस में वैल्यू एडिशन होना चाहिए, इट डू नॉट मीन कि आप कहीं स्पेशल जाके कुछ स्पेशल सर्च करोगे, आपके सामने ऑलरेडी वैल्यू एडिशन है. Okay, so whenever you read any topic, keep thinking कि where can I link it, what can I do about it. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे ये इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए आ सकता है, उसी तरह से फॉर दिस फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी दिस कैन बी वी यूज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग. इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग में यूज कर सकते हैं एज ए सजेशन. देन एनर्जी ट्रांजिशन एग्रीमेंट. ओके, तो एनर्जी ट्रांजिशन बेसिकली नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी टू द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. From fossil fuels based energy, coal based energy to the solar based energy, wind based energy and other renewable source of energy, right? So the bank should move and bank should give the financing for the renewable energy. Okay, bank जो है वो renewable energy के लिए loan दे. Now suppose there is a question on how to promote renewable energy, so you can use this point that in the UNCTAD report, Trade and Development Report, the energy transition agreement should be signed. इस तरह से आप इसको एज वैल्यू एडिशन यूज कर सकते हैं. देन दे शुड बी इजी ट्रेड रेगुलेशंस. ओके, एंड दे शुड बी डेट सर्विसिंग एंड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर रिफॉर्म. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेट सर्विसिंग हियर? डेट सर्विसिंग, प्लीज राइट, प्लीज अंडरलाइन दिस एंड मेक ए स्मॉल एरो एंड प्लीज राइट. डेट सर्विसिंग का मतलब होता है, डेट क्या होता है? लोन. ठीक है, सर्विसिंग डेट मीन्स रीपेमेंट ऑफ लोन एंड रीपेमेंट ऑफ लोन प्रिंसिपल बेसिकली, है ना, एंड द इंटरेस्ट पेमेंट एंड द इंटरेस्ट पेमेंट. ठीक है, तो डेट सर्विसिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि जैसे सपोज मैंने लोन लिया है, ठीक है, मैं कंपनी हूं, मैंने लोन लिया है, तो व्हेन आई से आई नीड दिस मनी फॉर डेट सर्विसिंग, I mean I need this money for repaying the original amount that I have taken from the bank plus to repay the interest that is there on the loan that I have taken. Understood? So debt servicing is a term which is used for this purpose. Bond yield we have already discussed.